So hello friends and welcome to the series of lecture on Indian economy. So today we are going to start the food processing industry topic. Okay. So we will have covered the agriculture sector in the last two lectures. So now we are going to start this concept. This actually topic is also related to agriculture somewhere, but a special separate attention was required. That's why we need to cover this topic separately. Okay, and we all know that this part topic is especially also in the main syllabus separately. Okay, so myself Nihit Kishore and I'm taking your economy lectures. So let us begin the lecture. So starting with what is food processing basically. So food processing in operations include many methods that are used to add value to the raw food materials, including the marine products, poultry and meat, which can be consumed by human beings or animals. Raw food materials are transformed into edible products through processing and value addition. तो ये है food processing, ठीक है? And the operations involved in food processing are mainly classified into two groups. That is the primary processing and the secondary processing. This provides employments to rural people. क्योंकि आपको पता है कि फूड प्रोडक्ट्स रॉ फूड प्रोडक्ट्स का अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उसलिए रूरल पीपल को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है including women, and prevents capital drain from rural to urban areas and thereby helps in narrowing down the economic disparity between rural and urban population. Okay, now primary processing relates to the conversion of raw agriculture produce, milk, meat and fish into a commodity that is fit for human consumption. So it involves steps as cleaning, grading, sorting, packing, etc. Whereas secondary and tertiary processing industries usually deal with higher level of processing, जहाँ पे नया या फिर कोई modified food products बना रहे हैं all together. Okay, so all the raw food materials are processed to improve their palatability, nutritional value and shelf life. And foods are processed in five major reasons. First is preservation, second is removal of inedible portions, third is destruction or removal of harmful substances, fourth is conversion to form desired by the consumer, and fifth is subdivision into food ingredients. Okay, now the present status of food processing in our country. So Indian food industry is poised for huge growth, increasing its contribution to world food trade every year. ठीक है? In India, the food sector has emerged a high growth and high profit sector due to its immense potential for value addition. ठीक है, तो इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग है उसका इसको बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया. Present status is also very good. Okay, then accounting to above 32% of country's total food market, India has been instrumental in growth and development of food processing industry. Okay, and the government through the Ministry of Food Processing Industries is making all efforts to encourage investment in business, such as like it has approved proposal for joint ventures, foreign collaboration, industrial licenses and 100% export oriented units. Okay, then the importance of food processing. ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज जो हैं और सॉल्यूशन क्या हो सकती है उसकी, वो हम लोग अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो अगर आप देखें तो इश्यूज में रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ये है. Indian agriculture is infested with post-harvest wastage problem. In the category of fruits and vegetables, it is about 30 to 40%. Overall, the cost of wastage is estimated at about 18%, ranging from 50,000 crores to 1 lakh crore. You can see that how huge the wastage is, and it is attributable to several factors including non-availability of facilities for sorting, grading, packaging, storage, transportation, cold chain and low level of processing of agriculture produce. Okay, and food processing can halve this loss, so consequently farmer will able to get more value and consumer will get more products cheaper. तो वेस्टेजेस जो है प्रॉब्लम, उसको एक इशू है फूड प्रोसेसिंग उसको सॉल्व कर सकता है. सॉल्यूशन में क्या है, मेगा फूड पार्क स्कीम. The key objective of this scheme are to reduce wastage of perishables, raise processing of food item from 6% to 20%, and raise India's share in food processing from 1.5 to 3% of GDP. Okay, and food processing industry has the capacity to halve this particular wastage loss. Then reducing the urban rural disparity. India's demographic dividend is much talked about and most of them lies in rural India. So Indian youth is turning away from agriculture because of low profitability. तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगा, अभी सिर्फ 3% FPI जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट,
जबकि डेवलप कंट्रीज में ये 14% के आसपास है। तो इसको अगर ऊपर काम करे गवर्नमेंट, तो जो लोग एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं, जो यूथ, दे विल नॉट बी कीपिंग और यू कैन से मूविंग अवे और माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज. They will be staying and they will be being they will become the part of food processing industry. Okay, national mission on food processing. The objective of this very scheme is to have a better outreach and to provide more flexibility to suit local needs and enhancing agriculture productivity and farmers' income in the country. So FPI is perhaps best bet to seize opportunity of demographic dividend. It can give us a genre of progressive rural entrepreneurs. In short, FPI can narrow gap between rural and urban India and will have multiplier positive impact on socio-economic and political problems. Okay, and it is employment intensive industry, so that is why it is also very important. Then curbing the food inflation. So food inflation has been a problem in our country, and it is eventually passed through the into manufactured goods through higher money wages. So well developed food industry अगर होगा तो it will compact the supply chain will रिड्यूस द फूड इन्फ्लेशन वाया डिसइंटरमीडिएशन, मतलब कोई मिडिल मैन या फिर आपको एजेंट नहीं होगा बीच में, एंड लेस वेस्टेज जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा. इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ सब्सिडी. दिस रिजल्ट्स इनटू सरप्लस प्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू ग्रेन्स रॉटिंग इन गोडाउन्स, क्योंकि प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है हमारे पास एफसीआई के पास. तो इंडिया को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है. ये सिर्फ राइस और व्हीट से भी आगे बढ़ना है फार्मर्स को. तो प्रमोट फूड इंडस्ट्री विद बैकवर्ड लिंकेजेस टू फार्मर्स, जो कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, मीट, पोल्ट्री, ग्रेन एटसेट्रा का आपको ग्रो करें. तो बैकवर्ड लिंकेजेस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट वो सारी इंडस्ट्री लेकर आए या प्रमोट करे जो पीछे से जो है ये इनके यहाँ से सप्लाई ले सकें इन सारी चीज़ों का. देन अग्रेसिवली मार्केट द प्रोसेस फूड इन बोथ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली. एक्सपोर्ट पोटेंशियल को डेवलप करना होगा, एंड द फार्मर्स विल सी गुड इनकम अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली इन ग्रोइंग नॉन सीरियल क्रॉप्स एंड द एक्सेसिव रॉटिंग व्हीट सरप्लस प्रॉब्लम इज सॉल्व. In the key drivers of Indian food processing industry, the strong demand growth, flourishing farm sector, and increasing investment. These are the three key drivers that will drive the food processing industry sector to achieve success. Okay. Now scope, तो स्कोप भी वही है कि हम जैसे कि हमारे यहाँ डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, मैंगोज एटसेट्रा, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, देन मिल्क, बफेलो मीट, ऑल दोज थिंग्स. जो फूड के बारे में बात करें तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इंडिया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट. Then demand for processed convenience food is constantly on the rise with the rise of middle class and the rise in per capita income. Choices are being upgraded. So food processing industries can absorb a major share of workers from the agriculture sector who face disguised unemployment. Disguised unemployment I have already explained to you in unemployment that जितने ज़रूरत है उनसे ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड है किसी पर्टिकुलर काम में, तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये टैकल कर सकता है कि वहाँ जहाँ भी लोग एक्स्ट्रा बिना मतलब के अगर एम्प्लॉयड हैं उसको हटा के ये लोग अपने एरियाज में एम्प्लॉय कर सकते हैं. फूड वेस्टेज प्रिवेंट. इंडिया में जो वर्कफोर्स है दैट इज़ वेरी चीप, तो वो यूज़ किया जा सकता है इसको और एक्सपोर्ट मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए. लिबरलाइज पॉलिसी रेजीम एंड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन मेरी इंडिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. जो कुछ इंपॉर्टेंट वंस है जैसे डेयरी, गेन प्रोसेसिंग, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, फिशरीज एंड कंज्यूमर फूड्स इंक्लूडिंग पैकेज फूड, बेवरेजेस एंड ड्रिंकिंग वाटर. चैलेंजेस क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के? तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे देश में है. कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी ऑन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये अभी ड्राफ्ट आया है, हम लोग देखेंगे बाद में इसका ऑब्जेक्टिव. देन द फूड सेफ्टी लॉज एंड इनकॉन्सिस्टेंसी इन स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज. ओके. Then we have lack of adequate trained manpower, lack of holistic approach. Okay. Then cost-effective food machinery and packaging technology is lacking. Constraints in raw material production, lack of access of credit, and lack of applied research. Plus, very complex taxation system. So this has been addressed by implementing GST, but still GST is also having a lot of complications and the procedures are very complex. Okay, so these are the problems which has been faced by
the food processing industry or the challenges which government is facing in the development of food processing industry. Okay, so now government has started some initiatives. Okay, so the government initiative for development of food processing industry. So 100% FDI has been allowed in the automatic route. So one of the biggest step. Then the agri export zones. So to give thrust to export of agro products, new concept of agri export zones was brought in 2001. So agri export zone is a specific geographic region country में that is demarcated for setting up agriculture based processing industries mainly for export. तो जैसे SEZ था उसी तरह AEZ भी इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. देन विजन 2015 आया था, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने फूड पार्क जैसे हो गया, ये सारी चीज़ें, फिर वैल्यू एडिशन जो है वो 20% से 35% बढ़ाने का, और ग्लोबल फूड ट्रेड में जो है शेयर है वो 1.5% से 3.53% करने का था, वो विजन था इनका, विच हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड. देन नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, तो मिनिस्ट्री जो है इसकी उसने एक नया स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया, दैट इज नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट द मेगा फूड पार्क स्कीम. So it was launched in 2008, where the government provides financial assistance up to 50 crore to set up a modern infrastructure facility for food processing called the mega food parks. तो ये वेस्टेजेस को टैकल करने के लिए और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है फूड प्रोसेसिंग में उसको उसके शेयर को बढ़ाने के लिए. तो इट इज़ बेसिकली अ हब एंड आर्किटेक्चर कंप्राइजिंग कलेक्शन सेंटर्स एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स एज स्पोक्स लिंक टू अ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर एज हब. तो ये आप देख सकते हैं मेगा फूड पार्क है. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो एक्सपोर्टर, डोमेस्टिक सेल्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक सेल्स. ठीक है, तो SHG, फार्मर ग्रुप, इंडिविजुअल फार्मर सब यहाँ पे आके अपना कर सकते थे. देन स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो एग्जीक्यूशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क आर वेस्टेड विथ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल. ठीक है, देन नाबार्ड में एक स्पेशल फंड बना दिया गया है विद अ कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ for establishment of mega food parks. Now, most important feature of mega food parks is cluster based approach, then demand driven with focus on strong backward and forward integration, जो farmer से लेकर food processing industry पे लाना और फिर यहाँ से forward linkage जाके targeted audience तक पहुँचाने का वो. Then enabling infrastructure creation along the supply chain and technology. Creation of central processing center and primary processing center हमने ऊपर देखा. Then common facilities and amenities to be assisted, leverage investments in food processing units, stakeholder participation with private led initiative through special purpose vehicle, assistance to creation of common enabling facilities, then typical project cost invoices that between 120 to 150 crore, then land not eligible for funding out of government of India grant, then assistance from ministry. उसके बाद 50% of project cost limited to 50 crore in general areas और डिफिकल्ट और हिली एरियाज में दैट इज 75%. So now we will be looking on some other steps like modernization of abattoirs. Abattoirs आपने सुना होगा, जो बूचर खाना जिसको बोलते हैं, दैट यहाँ पे कि जो पोल्ट्री वगैरह या फिर जो भी कटिंग वगैरह होती है एनिमल्स की उसको बोलते हैं. So the scheme of modernization of abattoirs was launched during 2008. इवन जो नई गवर्नमेंट आई उसने भी इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी है. देन कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, क्योंकि कोल्ड चेन जो फैसिलिटीज़ है इंडिया में दैट इज़ वेरी पुअर. FCI के पास बहुत ही कम कोल्ड स्टोरेजेस हैं अभी. इन R&D, कोडेक्स, प्रमोशन, QA, ये सब हम लोग देखेंगे, क्वालिटी अश्योरेंस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, वो सब है. फिर फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज बनाई गई हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP, that is the scheme related to the food processing industry. अभी हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे. तो वो स्कीम हमने इम्प्लीमेंट कर दी है. उसके बाद प्रमोशनल एक्टिविटीज वी आर कंडक्टिंग, देन स्कीम फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सो दीज स्टेप्स हैव बीन टेकन प्लेस ओवर द पर्टिकुलर ईयर्स. एंड और भी बहुत सारी स्कीम जो नई नई है वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एडिशंस में. Now what more needs to be done? अब हम लोग कंटेम्प्रेरी इशूज बेसिकली स्टार्ट करेंगे.
ओके, देन वी विल सी व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। कुछ नए स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं जैसे पीएम संपदा स्कीम, वो लोग हम लोग देखेंगे अभी लास्ट में। जो कॉमन टेम्परेरी इशूज है दैट इज द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन इन सप्लाई चेन। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कॉमर्शियल सेटिंग में, पहले उसको समझते हैं। तो द सप्लायर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर और ट्रेडर आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम साइड, whereas the customers are part of downstream side. So entity which is considered upstream and downstream keeps on changing based on the position of the entity under observation. For a farm, for example, a farmer, the supplier of seeds and fertilizer lie on the upstream side, while the cold storage owners, farm contractors, mill owners and traders of his produce lie on the downstream side. तो इनके बीच का जो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन इज व्हेन अ पर्टिकुलर एंटिटी assumes two or more roles in a supply chain. For instance, a chips manufacturer instead of obtaining potatoes from farmers begins to procure them from its own farms. This type of integration in the supply chain will be called backward integration. And this can also be reversed. If a farmer sets up a processing plant for manufacturing chips from his potatoes, rather than selling it to the downstream entity, it will be termed as forward integration. So therefore, even direct farming is a form of forward integration. Okay. So the forward and backward integration is also known as vertical integration, and it is a common occurrence in any business as it saves the cost associated with the supply chain. So in order to have efficiency and more profit from a business dealing with perishables like food processing industry, it is important to have the primary requirements of downstream as well as upstream fulfilled. Some of them are required to be facilitated by the state while others can be adopted by best practices in the industry. And this will reduce wastages as well as ensure increased profits also. Okay. So कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपस्ट्रीम की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल, देन मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, then it is important to ensure good linkages with farmers, then storage facilities, good quality testing facility, transport facility and sizable amount of workforce. Supply chain management अगर देखें तो it is the management of flow of goods and services. It includes the movement and storage of raw material, work in process, inventory, finished goods from point of origin to point of consumption. तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। रॉ मटेरियल, component, then manufacturer, then retailer and ultimately the consumer. Okay, तो दिस आर द इम्पोर्टेंस, आप देख सकते हैं इसमें, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ओके, नाउ व्हाट आर द गैप्स? इनएफिशिएंट प्राइस सिग्नल्स, लिमिटेड रीच ऑफ मंडीज, सप्लाई चेन के गैप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लिमिटेड रीच ऑफ मंडीज, देन इनएफिशिएंट प्राइस सिग्नल्स, आफ्टर दैट टू मेनी इंटरमीडियरीज, information asymmetry, then inadequate infrastructure for storage, the skewed distribution of capacity, lack of cold storage infrastructure, then lack of collateral management options. So all these are the lack, you can say the gaps or you can say limitations of supply chain management in our country. Now the economics of animal rearing, that is now we are starting the livestock. So livestock plays an important role in Indian economy. Okay, ये डेटा हम लोग नहीं देखेंगे because this data is old. I have included the latest livestock census in this lecture only. तो उसमें हम लोग livestock census देख लेंगे ये क्या है। So contribution of livestock ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि food, then fiber and skins, draft. So bullocks are the backbone of Indian agriculture. Despite a lot of advancement in the use of mechanical power, but bullocks they are still irreplaceable. Then dung and other animal waste materials, storage, weed control. They have also cultural affinities, then sports, recreation and companion animals. तो इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में लाइफ स्टॉक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2015 ऑल्सो, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग. Okay, so it has led to the achievement of inclusive growth in our country. So livestock plays an important role. So from agriculture, livestock is employing 8.8%. Okay, and it is going around 40 to 48% in Punjab and Haryana to 3% in northeast states. And there are certain challenges faced by livestock sector in our country. So
Improving productivity in a huge population of low producing animal is one of the major challenges. Then frequent outbreaks of diseases between, especially between the cattles. Okay. Then India's huge population of ruminants remains a major source of greenhouse gas, adding to global warming. Then crossbreeding is another problem. तो limited artificial insemination is there. अभी गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सो मेनी स्कीम्स, जो हमने स्कीम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर, जैसे कि कामधेनु, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऑल दोज थिंग्स. देन द सेक्टर विल ऑल्सो कम अंडर सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट प्रेशर टू द इमर्जिंग मार्केट फोर्सेज. नाउ इट ऑल्सो रिसीव्स अ वेरी लेस, और यू कैन से reduced financial and policy attention from government. Now, livestock derives a major part of the energy requirement from agriculture byproducts and residues. Hardly 5% of the crop area is utilized to grow fodder. India is deficit in dry fodder. इसलिए जो कि इनका बेसिक रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल जो है लाइव स्टॉक सेक्टर का, दैट इज द एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स एंड रेसिड्यूज, सिर्फ 5% ही क्रॉप एरिया दैट इज यूटिलाइज टू ग्रो फॉडर. So that is why India lacks in dry fodder. Then access to market is critical to speed up commercialization of livestock production. Deficiency of vaccines due to industrialization and urbanization, majority of grazing lands are being degraded or encroached, and diversion of feed and fodder ingredients for industrial use. तो स्कीम्स लॉन्च की गई, जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन ऑलरेडी हैज बीन लॉन्च्ड, and it has 4 submissions like submission on fodder and feed development, then on livestock development, pig development in northeast, and skill development, technology transfer and extension. साथ साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके इस बार के बजट में भी इसमें पैसे बढ़ाए गए हैं. So it aims to conserve and develop indigenous breeds in focused and scientific manner. For that, breeding facility will be set up for varieties of high genetic pedigree. Okay, तो indigenous breeds को डेवलप करने की ये पर्टिकुलर स्कीम है गोकुल मिशन. Then e-पशुधन Art portal. So it is an e-market portal for bovine germplants for connecting breeders and farmers of indigenous bovine breeds. Then Pasudhan Sanjeevani. So these are all related to livestock rearing in our country. Now the subsectors of the livestock. So dairy sector की बात करें, and that is related to the white revolution. Okay, so dairy revolution और dairy sector से जो boost हुआ था production, उसको white revolution बोलते हैं. And the famous operation name was Operation Flood. Okay. So the father of white revolution in India is Professor Varghese Quirian, who started the famous Amul. Okay. What are the objectives? The main objective of the cooperative society are the procurement, transportation, storage of milk at the chilling plants, then to provide cattle feed, production of wide varieties of milk products, and their marketing management. The societies also provide superior breeds of cattle, health service, veterinary treatment, and artificial insemination facilities. Then the objective is also to provide extension services. ये सारे जो हैं वो कोऑपरेटिव जो मिल्क सोसाइटीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो वाइट रिवोल्यूशन के फेजेस अगर देखें तो फर्स्ट वाज 70 to 81. तो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज सेट अप इन 10 स्टेट्स उस टाइम पे. ओके, एंड फेज 2 81 to 85. देन इट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू सम अदर स्टेट्स. फेज 3 85 to 2000. तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज केम अप. ओके, नाउ वाइट रिवॉल्यूशन के अंदर जो मेजर अचीवमेंट्स हुए हैं वो हैं, इट मेड अ साउंड इम्पैक्ट ऑन रूरल मासेस. तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो गांव में इसका हेल्प होता है. देन इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर डे एट प्रेजेंट इज वेरी हाई, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइट रिवॉल्यूशन. इम्पोर्ट जो है बहुत कम हुआ है मिल्क का. The small and marginal, but at the same time we do not export also a lot despite being largest producer because our domestic requirement is very huge. Okay, so you have to, for prelims you have to remember this Operation Flood. Now the problems of dairy industry, because of small holdings and scattered milk production, the collection and transportation of milk in good quality to market is difficult. This leads to an inefficient utilization of milk products. Then unhygienic production, inadequate marketing facility, this is very very important. Then crude methods for milk collection and production are used, which उसके productivity low है. And Indian cows and buffaloes are generally low yielding and non-descript because of lack of healthy cattle feed and fodder.
जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिशरीज से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन, ओके। एंड इसमें जो हमारे स्टेप्स हैं दैट इज वी हैव सेपरेट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। तो हमारे पास एक सेपरेट मिनिस्ट्री हमने फिशरीज को डेडिकेट कर दी है, फिशरीज एंड इसको क्या बोलते हैं लाइफ स्टॉक के लिए। सो वी विल सी सम चैलेंजेस ऑफ द फिशरी सेक्टर। तो शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी एंड हेल्थ फिश सीड्स एंड अदर क्रिटिकल इनपुट्स, absence of standardization and branding of fish products, inadequate extension staff for fisheries and training for fishers and fisheries personnel, then inadequate awareness about nutritional and economic benefits of fish, साथ साथ lack of resource specific fishing vessels and reliable resource and updated data. Then the poultry sector. So India is one of the fastest growing segment of agriculture sector today, जो Indian poultry है वो. And as the production of agriculture has been rising, while the production of eggs and broilers has been rising at a rate of 8 to 10% per annum. Okay. So reason behind this huge growth is the contributing factors are the Indian poultry industry has grown largely due to initiatives of private enterprises, minimal government intervention and very considerable indigenous poultry genetics capabilities, and also the support from the complementary veterinary health, poultry feed, poultry equipment and poultry processing sectors. India is one of the few countries in the world that has put into place a sustained specific pathogen free egg protection project. What are the challenges the poultry sector is facing? डिस्पैरिटी बिटवीन स्टेट्स, तो रीजनल डिस्पैरिटी है। हीट वेव्स जो आते हैं वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जा रहे हैं और चिकन के प्राइसेस आर गेटिंग हाई। एवियन इन्फ्लुएंजा वेरी कॉमन इन इंडिया। रॉ मटेरियल शॉर्टेज, देन human resource shortage is again a problem. Indian poultry sector is still unable to tap the benefit of international market. Majority of production is unorganized, तो unorganized है तो बहुत सारी problems उनको भी फेस करनी पड़ती हैं। Now what can be the way forward? So strong marketing network to set the industry free from clutches of middlemen, then government support to public poultry education and R&D institution, subsidy credit, insurance against losses, support and promotion of the processing sector, promote both mass production as well as production by masses, building infrastructure to meet the growing manpower demand, and government support to public poultry education and R&D institution. Okay, so all these things can be done by government to ensure that poultry sector reaches its highest potential in our country. Now, the previous UPSC mains question from these topic, फिर हम लोग अभी current के कुछ aspects देखेंगे इन सारे topics के. So first was what are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit, and how the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers. तो जितने challenges हैं bottlenecks हैं आप पहले उसको देखेंगे और फिर उसके बाद आप उसके solution जो way forward हमने discuss करे वो बात करेंगे. Then what are the impediments in marketing and supply chain management? Simple question जो हमने already discuss किया है. And can e-commerce help in overcoming these bottlenecks? तो definitely आप example cite करेंगे. E-commerce can help, definitely going to help the supply chain management and it is already doing so. तो बहुत सारे जैसे कि आप example देंगे किसका? Big basket. Big basket का example देंगे, grofers, बहुत सारे हैं जो कि जैसे बिग बास्केट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि वो डायरेक्टली फार्म से आपके पास डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को. ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेंशन बाय ई कॉमर्स के हेल्प में बता सकते हैं. चलिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो असेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड कमोडिटीज इन इंडिया बाय आईकार. जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं. तो गवर्नमेंट ने जो है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च किया है. सो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है. हम लोग इसमें देखेंगे और कितने कितने स्कीम्स अभी आएंगे. हम लोग नीचे यहाँ पे सॉरी. तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और इसका ऑब्जेक्टिव है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट. और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें कुछ और स्कीम्स जो है वो सब्ज्यूम्ड है जैसे कि मेगा फूड पार्क्स इसके अंदर अब आ गई. इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, ये भी इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाएंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रखेंगे. देन स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज,
फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लैगशिप स्कीम जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके अंदर इतने सारे स्कीम्स हैं। तो ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमने एक सिंगल स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, एंड दिस स्कीम इज, you can say, the parent scheme that is going to tackle all the requirements, all the problems and all the needs of food processing industry in our country. तो आपको इस स्कीम के बारे में सब कुछ पता है। देन एफडीआई पॉलिसी, तो ऑटोमेटिक रूप में 100% वी हैव डिस्कस अबव आल्सो। नाउ एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बीन क्रिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट फोकसेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपोर्ट्स के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी ऑलरेडी बना दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट हमारा पोटेंशियल है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। देन वी हैव ऑल्सो केम अप विद द नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। टू रिड्यूस वेस्टेजेस, इंक्रीज वैल्यू एडिशन, इंश्योर बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर्स वाइल इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड क्वालिटी प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। तो दोनों साइड के जो आपको जो रिक्वायरमेंट्स या दोनों साइड का आप ये कह सकते हैं कि कंसर्न है उसको गवर्नमेंट देखना चाह रही है, एड्रेस करना चाह रही है। देन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ माल नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड्स, टू मेक फूड प्रोसेसिंग मोर कॉम्पिटिटिव एंड फ्यूचर रेडी थ्रू क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अलॉन्ग द सप्लाई चेन, use of modern technology and innovation, promoting traceability, food safety, encouraging optimum capitalization of assets and resources. Then, to position India as the most preferred investment destination for the agri-business and food processing, and as well as to generate more opportunities for the development of the agri-business and food processing industry and create employment. Okay. So this was the objective of National Food Processing Policy. Now, 20th Livestock Census. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, जो मैंने आपको बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी ऑलरेडी नाउ इट इज़ बीन क्रिएटेड, इन्होंने अपना रिसेंटली सितंबर महीने में ही जो है वो लेटेस्ट 20th लाइवस्टॉक सेंसस रिलीज़ किया है। उसमें आप देख सकते हैं जो डेटा है लेटेस्ट है। कैटल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, एंड बफेलोज, शिप एंड गोट्स। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो 5.78 मिलियन है। दैट मीन्स कि लास्ट सेंसस जो है उससे 4.6% इंक्रीज। वेस्ट बंगाल ऑब्जर्व द हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ 23%, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, देन तेलंगाना। टोटल नंबर ऑफ कैटल हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 0.8%, एंड द इंक्रीज इज मेनली ड्रिवन बाय sharp increase in cross breed cattle and higher female indigenous cattle population. उसके बाद a decline of 6% in total indigenous cattle population has been observed. तो इसीलिए जो indigenous cattle के लिए हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है आपको इस indigenous breeds को बचाने की कोशिश कर रही है। Now the backyard poultry has increased by around 46%, and a sharp increase in backyard poultry is a significant change in the rural landscape, which shows a sign of poverty alleviation. And total bovine population, जो cattle, buffalo, methone and yak हैं, it has shown an increase of about 1%. Okay, and the population of sheep, goat and methone grew in double digits. So this is important. And talking about the livestock census जो है वो क्या है, तो it is basically conducted in the country periodically since 1919 to 20, and since then it has been conducted once every 5 years. It covers all domesticated animals and their head counts, और total 19 सेंसस अभी तक हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, जिसमें कि पार्टिसिपेशन जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। And the census is beneficial not only for policymaker but also for agriculturalists, traders, entrepreneurs, dairying industry and masses in general. So this was all from food processing industry sector. तो हमने issues देख लिए, इंडिया में स्कोप देख लिया, इसके जो मैं आपको जो स्ट्रक्चर होती है वो हमने देख लिया, जो सप्लाई साइड, डिमांड साइड, चेन, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, वो हमने देखा। इश्यूज देख लिए, दैट मीन्स द चैलेंजेस। उसके बाद हमने जो है वो देखा कि इसका वे हेड कैसे, कि हम आगे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या क्या किया है।
फिर हमने एफपीआई का जो है वो सब सेक्टर्स देखा, जैसे कि लाइफ स्टॉक में फिशरीज, डेयरी, ऑल दोस थिंग्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जो स्कीम्स है जैसे मेगा फूड पार्क, संपदा योजना जो उसके अंदर है वो इम्पोर्टेंट है। तो द एजेंडा फॉर नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग। ओके, तो पहला पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल सी द टाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देन द टाइप्स, then the importance of infrastructure for our country. Then we will see two infrastructures, the road and railways in the first part, and then we will be discussing the second part. तो उसमें हम लोग फिर आपको पोर्ट्स, एविएशन, लॉजिस्टिक्स वो देखेंगे, साथ साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है वो देखेंगे सेकंड पार्ट में। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन फील फ्री, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ डू लेट अस नो, वी विल गेट बैक टू यू इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, so thank you so much friends and see you in the next lecture with infrastructure. So now we are left with only three basic lectures, that is infrastructure 2 lectures and then one will be investment model and services sector। 3 लेक्चर बेसिक्स के बचे हुए हैं यानी कॉन्सेप्चुअल के, उसके बाद जो है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे जैसे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, देन बजट, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, सेंसस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वो हम लोग करेंगे। तो अराउंड 7 to 10 लेक्चर्स हमारे बच गए हैं। और तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।